ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਬਵ ਆਰਡੀਨਰੀਜ਼, ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ origin of UK citizens। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰ ਤਨਵੀਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੂਫਿਆਨ ਆबिद डोगरा जी, मोहम्मद अजीब जी himself, इश्ताक अहमद एंड यकूब निज़ामी जी। हाँ जी, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। मेरे ख्याल में इशूज ऑफ कंसर्न जो हमें यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट हमारे सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में साहब इशारा किया। और एक बात भी यही है, वो बड़ी जानदार है। इंसाफ, इंसानी हकूक, जस्टिस, जिसके अजीब साहब इनके साथी अधिकार थे, वो उस वक्त भी उसकी जरूरत थी 4 साल पहले, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। That message is for us and that is message for our future generations. We as a community have achieved much, but there is much that we need to achieve or can achieve. And that is something, that is the work that I think people like Ajib Saab and Shiraz Saab and Sultan Saab, Dr. Kabir Saab, Yaqub Nizami Saab, जिसने हमारी कौंसल मीरा मेरी बहन है रिजवान जलील यहाँ बैठे। कुछ हमने काम किया है, बहुत से आपने ये काम करना है। लेक्सी ये नहीं है कि किताब लिख दी और उसे महफूज कर दिया। लेक्सी ये होती है कि वो लेक्सी आइंदा हमें हमेशा की इंस्पिरेशन देती है और उसे देना चाहिए। तो जो इंसाफ और जस्टिस और आज़ादी और इंसानी हकूक़ का एजेंडा इन भाइयों ने उठाया है, जिसके अजीब सब सरबराह थे इराक में, उस झंडे को आपने उठाकर आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल ये मैसेज था सल्लल्लाहु साहब का, इनकी अपनी खूबसूरत अंदाज जो मेरी समझ में आया। पर अब मेरा काम तो खत्म, जफर तनवीर भाई का काम शुरू।
आए जनाब। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इश्ताक साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जिम्मेदारी है, निभानी है, और बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आपके ज़हन में हैं या आप अरसे से पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो अजीब साहब के बारे में। ये जो सेशन है ये गुफ्तगू का सेशन हो। मैं अजीब साहब से कुछ सवाल करूँगा, उसके बाद आप हज़रात से दावत दी जाएगी कि आप उनसे सवाल कीजिए, आपके ज़हन में जो कुछ है इनकी जद्दोजहद के बारे में, कल के प्रोग्राम के बारे में, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में, वालिदैन की सोच, जो कुछ भी आपके ज़हन में ये उनसे पूछिए। लेकिन इससे पहले कि ये इसका वो बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं दो बातें। पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह आप ये नाम देख रहे हैं ना, तरतीब व तमाम, इश्तियाक अहमद, याकूब निज़ामी और ज़फ़र, बिल्कुल इसी तरतीब से हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन है। अलम जो है वो इश्तियाक अहमद के हाथ में था, सब काम इन्होंने किया है, जो रहता था वो याकूब निज़ामी साहब ने किया है। मैंने मेरा हिस्सा सिर्फ इतना है जितना आटे में नहीं होता। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता था कि इससे पहले पिछले दिनों हमारे यहाँ पे बर्मिंघम में एक इजलास हुआ, वो था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मीरपुर के साबित तलबा की एक यूनियन है, सरोशियंस उसका नाम है, और उसमें कुछ लोगों को, पुराने तलबा को भी बुलाया गया, कुछ लोगों को, अजीब साहब को भी जाना था वहाँ पे, ये जा नहीं सके, तो मैंने अजीब साहब के बिहाफ पे वहाँ से इनका जो तोहफा था वो उन्होंने मुझे दिया, और मैं आपके सामने वो अमानत इनके हवाले करना चाहता हूँ। और ये भी देखिए अजीब इत्तेफाक है कि उन्होंने दो लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, और दोनों आज यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो अजीब साहब हुए, दूसरे असलम लोन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले कुछ चीज़ें अजीब साहब ये सरोशियंस की तरफ से महफिल का आगाज़ करते हैं। अजीब साहब, जो बात जो मेरे ज़हन में, पहला सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि आपको कब एहसास हुआ कि आप मोहम्मद अजीब हैं? ओ यस यस यू सॉरी, मेरी गलती पूरा आदमी ये एक छोटा सा वीडियो है अजीब साहब, कुछ हमें यहीं फिर मैं सवाल का सेशन। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। I think I have to very sincerely thank all my friends who are present here. You join me on this occasion now launching this book, which has been translated very kindly by Sayyid Shabir Hussain Shah from English into Urdu. I have to appreciate his effort because it's not easy to translate any book of this size from English to Urdu. It's always difficult and it's always complicated, but he's done it. He's not here. You've seen his message in the very short video, but I have conveyed my sincere thanks to him if he's able to hear my voice. इंतहाई मशहूर हूँ मैं सब खातिन व हज़रात का जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इंतहाई खुशी हो रही है कुछ अच्छे मेरे पुराने दोस्तों को देखकर। नाम लूँ तो बहुत से जाने वाले
मेरे वेल विशर्स भी हैं, मेरे चाहने वाले भी हैं, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया मेरी जदोजहद के दौरान, who was a source of strength for me, and that of course includes my dear wife. Very briefly, I think, after two things on this paper, it says that reflection. मैं क्या कहूँ, मेरी जिंदगी का सफर जैसे आपने ये कहा कि it's a very long journey, बहुत तवील सफर था, बचपन से। मैं पैदा हुआ है गाँव में, 15.5 साल की उम्र में मैट्रिक करके कराची आ गया, वहाँ से 5 साल के बाद मैं आ गया, मजदूरी की, ब्रिटिश रेल पे काम किया, बसेस पर किया, I faced discrimination in many ways or many occasions. I'll just these are anecdotes मैं आपको बताऊंगा, मुख्तसर एक दो स्टोरीज। पहला जो मेरा एक्सपीरियंस अब ये था कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, एक सुपरवाइजर था, तो उसने कहा मजबूत था अपने काम में, तो उसने अंग्रेजी में मुझे कहा है इधर आओ, तो मैंने विरोध किया उसको, उसकी जो टोन थी I didn't like it। और फिर उसने कहा तो आया मेरे पास, तो कहने लगा कि आप युद्ध है, मैंने नहीं, मेरे दो कान में अच्छी तो सुन सकते हो, why did you not respond to me? And I said, look, I'm not your dog, I'm a human being। तो कहते हो घर जाओ, तो जिस तरह को ये बंद करो, घर जाओ, निकलिए, it's okay। एक दफा फिर मैं बसेस पर काम करता था, एक गोरी ने कहा कि उस जमाने में कंडक्टर होते थे, वो चैन भेज देते थे, जब उसे मैं चैन देने लगा, उसने कहा कि no, I can't touch your hands, put the money there on the floor and not pick it up। मैंने कहा that's okay। एक तो भाई पूरी गोली में बस बाहर हुई, उसने कहा कि वेट रिपोर्ट करो, मैंने कहा जान छुड़ाओ इससे, तो पता नहीं होगा कि पाकिस्तान है भी दुनिया के नक्शे पे ही नहीं, मैं स्टार्ट कंपनी में ले आती, फिर हो oh yes, we stay there in huts। Like, yes, there are some huts, but there are some houses, and you got these doors made of tarmac and this and that, there are few, but जान न छोड़े, तो सवाल कर, मैंने कहा मैडम, have you ever seen picture of Taj Mahal? Oh, yes, beautiful building, it's one of the wonders of the world। मैंने कहा वो उधर ही है या मैं है? कहती है I know that, but of course it was built by Victoria, by the Queen Victoria। These were the conceptions of ourselves, the so-called in those days colored images। तो I always spoke about it, because these were the three typical लोग हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि on 23rd of August in 1958 I was 3-4 महीने हो गए थे नोटिंगम आए। Suddenly हमने जिस इलाके में हम रहते थे उसे कहते थे सेंटरम स्वाभी डिस्ट्रिक्ट है, and at that time it was very poor, one of the largest slums in Europe। तो हमारे पाकिस्तानी मेरा ख्याल है hardly there were about 200 Afro-Caribbean जिन्हें West Indians कहते थे, उनकी आबादी थी 2000 के करीब। तो शोर शराबा शुरू हुआ, हम बाहर निकले तो बड़ा हंगामा हो गया, पुलिस उनका आ गए। हमें मेरे हमें क्या पता था, खैर दूसरे दिन मैंने अखबार ली, उसमें देखा कि एक तो रेस riot। The first race riot took place in Nottingham in
on 23rd of August in 1958, which was followed then एक हफ्ते के बाद फिर लंदन में हुआ था हंगामा, क्या कहते हैं, नॉटिंग हिल। तो पुलिस उस जमाने में भी मुझे याद है कि they tried to make it not a racial issue. और दूसरे दिन मैंने देखा पुलिस चीफ कांस्टेबल का बयान ये था कि स्टेटमेंट ये थी कि it was just the hooligans, और ये जो मिसकर्स लोग हैं कोई नहीं है, it's not racial issue, we got to question all this kind of nonsense. वो पता ये चला, उसके बाद एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि बात अक्सर ये थी कि एक पब्लिक हाउस में शराब खाने में वेस्ट इंडियन कुछ एक बंदा था काला, वो एक गोरी के साथ शराब पी रहा था। तो अंग्रेजों ने उसे बाद में पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यू आर हियर एज एन इमिग्रेंट, यू आर ब्लैक, यू कांट सिट विद ए वाइट वुमन एंड गेट आउट ऑफ इट। उन्होंने बैन लगा दिया कि कोई काला बंदा इस पकड़े। तो फिर वो कुछ उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया, तो फिर वो एक हकामत सूरत में हुआ। पॉइंट आ गया वो बंदे फिर एक चर्च में मैं गया, उसमें वो बात कर रहे थे यही इमिग्रेंट्स, खासूसन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। और यहाँ पे जो चर्च को ये लोग बात भी कर रहे हैं ना, they were very try to be very sympathetic to be as far as the oppressed people are concerned. These are the poor people came from Africa and from India, and we should not treat them like that. And that's kind of stupid. So why there is, you think, that discrimination? Maybe I'll say to myself, but I'll tell you why. As I'll quote your own writer, Professor Panjabi. He was a very famous writer of these years. So he said that 300 years nearly of white supremacy among black races has actually conditioned the white people to act as white. And whereas it's conditioned the black people to act as black, and the result is that we are suffering from the superiority complex and you are suffering from inferiority complex. So these were the things which actually drove me into the race politics. Obviously, मेरा बचपन से उसके बाद जब यहाँ आया, मेरी अपनी सियासी सोच भी थी, मेरा एक सियासी नजरिया भी था, और मैंने शुरू से अपोज किया किसी किस्म की नाइंसाफी, खा वो माशी नाइंसाफी थी, खा वो समाजी थी, खा वो नस्ली थी, और इन नाइंसाफियों के खिलाफ फिर मैंने वहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में हिस्सा लिया, उसमें मेंबर बना, ट्रेड यूनियन में एक्टिव हुआ, एंटी रेसिस्ट कैंपेन में हुआ। तो ग्रेजुअली I think when you were about 20, by the time I came out, I was 19, I mean, my feelings were very strong about all the political issues. And I think that probably you've gone through that experience when you're about 19, 20. You have this kind of, you have very impetuous passion for something, and you want to fight, and you think that the whole world you can change overnight, but that's not the reality. I realize now after nearly 16 years. लेकिन इस बात में मुझे आगे आकर पॉलिटिक्स में शामिल हुआ, आगे से तो मेरी जो स्ट्रगल थी बेसिकली इट वाज अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ ऑप्रेशन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज बट फॉर सोशल जस्टिस एंड इनइक्वालिटीज डिस्क्रिमिनेशन अगर मजहबी डिस्क्रिमिनेशन है, I abhor that, I still abhor it. वुमेन के खिलाफ है, जेंडर, I abhor it, I still abhor it, I abhor it then.
और मुझे ये नहीं था कि कोई काला है, कुछ सफेद है, कुछ पिंक है, कोई येलो है। सबसे बड़ी नजदीक मेरे पास ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। कुछ लोग मेरे साथ अपने बंदे जिसको agree with my point of view, but that has been my ideology, my political convictions, my beliefs, which I've tried to preserve and fight for in all of my life. So, मैंने किसी पर एहसान नहीं किया। ये बस ऐसी बात थी, मैं चाहता था कि इंसाफ हो अपने लोगों के लिए। अंग्रेज जिनमें हम पर इतना सफेद काम मुबालक में हुए, अभी तक भी वो कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ। तो मैं ये चाहता था कि हमें इंसान समझा जाए, हमें बराबरी दी जाए इंसानियत के लिहाज से। एक दफ़ा मैंने कह दिया यहाँ ब्लैकबोर्ड में, लोकल अखबार में, ये 1977 की बात है। तो मैंने कहा कि ब्लैक पीपल, उस ज़माने में हम सारे काले लोग अपने आप को कहते थे। ये बाद में हुआ है, कोई एशियन बना, कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना। At that time we were all united fighting for our rights, and that was great. तो मैंने खाली इतनी बात की, मैंने कहा कि we so-called immigrants or black people in this country, we want our political share. I received over 150 letters of hate. Very richly, very richly. Who the hell you are, you bloody black man, asking for political share? Why don't you piss off back to your own country? और फिर मैंने देखा कि यहाँ भी जो गरीब लोग हैं, जो सफेद फार्म गरीब लोग हैं, उनके साथ भी ऐसे ही सलूक है। Because in British politics I began to realize plays a very ये जो class distinction है, it plays a very dominant role in British politics. So when I joined the Labour Party, then I tried to seek the support of those deprived and oppressed people too. I spoke for all oppressed people, irrespective of their racial, religious, or the national background. That is what I tried to achieve: equality for all human beings, irrespective. बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप भी जरा अजीब सा वो उस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपको कब एहसास हुआ? मुझे तो नहीं एहसास हुआ, वैसे मेरा नाम बड़ा यूनिक था। नहीं, मैं वो सच तो उससे एतबार से भी बात कर रहा हूँ, मैं ये इस एतबार से बात कर रहा हूँ कि जद्दोजहद का ख्याल आना और जद्दोजहद के लिए खड़ा होना कब से शुरू किया? मैं कह कि वो I was actually writing my own autobiography before I had this very serious bout of illness. My friend Daksa is there, he knows that. He was very helpful and very he advised me. Then actually he completely. Thank you very much. उसके बाद फिर को ऐसा सोचते ही है। जी जी। I hope you managed to survive. I think that I was 7 years old when the partition took place in the subcontinent. We were living in the state of Jammu and Kashmir, which was not directly ruled by British, but यह था कि वो महाराजा था। तो मुझे वो ऐसे हुआ कि महाराजे की वो विजिट था हमारे वो कस्बे के करीब है। तो मैं स्कूल में था, तीसरी या दूसरी पढ़ता था। तो टीचर कहता है कि कल तुमने वो लड़कों ने जाना है, तो वो खेलने के बाद घूम फरमा रहा है।
तो वहाँ सड़क के किनारे खड़े हूँ तो वहाँ नारे लगाए, तो हमें नारा ये दिया गया कि हम जब कहें कि महाराजा की जाए तो ये है वो। तो मैं जब गया तो साहब ने कहा बैठ दी, वो मुझे अच्छी बात नहीं लगी कि why should I, he मतलब प्रेस मेरे नज़दीक वो था, गोश्त नहीं खाने देते थे मुसलमानों को, बहुत सी थी, तो मैंने कहा इट्स रॉन्ग। और फिर दूसरी बात जिस तरह मुझे उकसाया वो ये थी कि जब गाँव में मैं देखता था कि जो बड़ी बिरादरी वाले लोग थे या पीपल हु हैड पावर, वो जो पावरलेस लोग थे उनको बड़ा तंग करते थे, मुश्किल को देगा ये वो गाली करो बात की जमाने की बात थी। तो आई यूज्ड टू थिंक वेरी डीपली कि व्हाई दिस इज I mean these differences, why we are all human beings, we are all Muslims, and that we are being discriminated against because of your profession, because of your whatever you do. So that caste system also, I think, made it think. And when I came to Karachi, I done debate union. I had to fight one or two instances where the labor force was really, the people were killed, the owner. So it was somehow, some of the instances actually drained in my sort of mind, and it's remained today. And that kind of passion, the zeal, I think, to do something about it, I think made me to commit all of my life for my efforts to eliminate racial discrimination or racism, or any form of discrimination, any form of injustice, whether it's economic, whether it's racial, or whether it's political, whatever it is. And I'm still fighting for that. My whole writing since जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, मैंने कुछ लिखे आर्टिकल ये वो, I think they're reflections of my own political thinking and ideology, and I never sort of make any secret about it. You know, कुछ लोग बोलते हैं वो लड़की ये है कि वो है। शराब साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ हमने अच्छा कुछ लोगों को कहते थे कि हाँ ये मुसलमान खाली मुसलमान, लेकिन मुसलमानों को ये खाली नहीं, क्योंकि मुसलमानों को जो भेजो वो हमने अगर ठीक काम किया, अगर 2000 गोश्त का मसला था, रूसी का ये वो, these were the all major issues irrespective कि वो आपको क्या है, जब सिखों की है कि हिंदुओं की है, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड थी, we used to go and demonstrate against it, regular war थी उसके बारे में हम जाते थे, तो this is the whole sort of I don't know how, but it was mindset in political terms, which always compels me when I see any form of injustice. Even in Pakistan, when I go, I can't tolerate so many. So it's a combination of many factors. अजीब सा पूछना मैं ये चाहता हूँ कि आपने इतनी जद्दोजहद की, आपने सोच जो है सारे तसबात का तो मुकाबला किया, खुद इस मुल्क में 1978 पे आप नस्ल परस्त होने के इल्ज़ाम लगे, लेकिन जिन लोगों को आपने लेबर पार्टी में रिक्रूट किया, उन लोगों को आपने क्या उनके नज़रिए की बुनियाद पर रिक्रूट किया था, उनके उसूलों की बुनियाद पर रिक्रूट किया था, या वो आपकी ज़ाती पसंद ना, क्योंकि उन तमाम लोगों ने बाद में आपकी मुखालफत की? ये मुश्किल सवाल है, इसलिए कि मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं था, मेरी नीयत बड़ी साफ थी। मैंने हमेशा कोशिश की कि नौजवानों को प्रमोट किया जाए। मैंने हमेशा ये मेरा ये बिलीफ था और अब भी है कि हमारी जो अक़लियतें हैं, और ख़ुसूसन पाकिस्तानी या इंडियन एशियन, बांग्लादेशी या अफ्रो-कैरेबियन बेचारी, वो they should make some
progress in all fields, walks of life, politics in particular, क्योंकि मेरा एक ये भी है कि दुनिया के किसी मुल्क में, दुनिया के किसी हिस्से में आप रहते हैं, जब तक आपके पास सियासी पावर और इकोनॉमिक पावर नहीं होगी, you will remain dregs of that society. Simply people don't respect you. तो मेरे ये सिंसियर है, कोशिश थी कि यंगस्टर्स को आगे लाया जाए। अब ये उनका अपने एक वो लेवल, आई थिंक अगर उन्होंने वैसे सोचा कि कुछ हुआ जो वो सेल्फ बिट्रेयल थी उनकी, मेरे उसमें नहीं है, वो एक हिपोक्रेसी है मेरे नज़दीक कि आप अब एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल एक नज़रिया, आइडियोलॉजी को बिलीव नहीं करते, you simply join that political party to become a councillor. You are bound to fail to make any contribution क्योंकि you don't believe in that kind of ideology. इससे बेहतर था आपको तो सबक पार्टी में जाहिर करते हैं। तो और मैंने हमेशा कहा कि join politics. I'm not saying to you join my party, which I've been a member of for the last 45 years. सारे सिस्टम है जो उसमें ज्वाइन करें, लेकिन आपने ये बात पूछी, मैं आज एक आपको बात करूँ, मेरे दिल की बात जो आपने महसूस कर रहा हूँ। I feel sad and disappointed this evening. I'm very extremely grateful to my friends. Abiba is here, Shehar Saab here, और बड़े लोग हैं यहाँ, आप तो यही हैं। There's only one councillor here. How many councillors there are? From Bradford. One and two from Bradford and one from Rochester. Actually, I'm extremely grateful to Khaled. I mean, he's always been a very close friend of mine. And we believe in certain ideology. We've got common beliefs. लेकिन बात ये मैं ये कह रहा हूँ, कितने काउंसलर है शफीक साहब? 34 नहीं, आपने बनते 34 ठीक है? और so there are 10 out of मेरा ख्याल है कि अगर लीव को हम शामिल करें तो we're talking about 14 altogether. ये बात है। चलो इसमें होटल में बैठो तो बात कर रहा हूँ, ये नहीं इसलिए ये मेरी I'm not angry, but I'm saying I'm dismayed and I'm really disappointed. मुझे वजह भी है कि मुझे सेकंड और थर्ड जनरेशन के साथ बड़ी वीडियो वापस करती हूँ। I know that I came here as a poor boy, not much knowing about the system of this country, political system of the ज़बान का मसला था, एक्सप्रेशन का मसला था, प्रोनाउंसिएशन का मसला, वो साथ थे हमारे। आज हमारी नस्ल जो है वो आगे बढ़ गई है, सब अच्छे and I always get happy whenever an Indian, Pakistani or any colored person or any black person moves up the ladder. Believe you, the one or two feelings with the hमेशा नहीं आने दिए, एक है एक jealousy. मैं भी शौक नहीं छोड़ता, मतलब आपने आगे जाते छूट जाता है, सियासत में जाता कहीं नहीं जाता है। लेकिन हम जिस पर इसलिए कि उनमें वो पैशन नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है, वो कम्युनिटी की आवाज़ या मसाइल को हाईलाइट करने में बहुत ज़्यादा है। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 80% की बात कर रहा हूँ। क्यों है? Why you are in politics? I went into politics to affect change according to my own political convictions and beliefs. There is no other justification कि आप मैं सही जाऊँ, कौशल बनूंगा, बीच पर मैं जाऊँगा तो वहाँ लोग बातें लगेंगे,
to be very honest and blunt, I have never मतलब मैं कि मैं आप लोग तो वो कहते हैं चापलूसी ये वो, मेरे नज़दीक वो बात नहीं है। बात वही करते हैं अगर किसी को बुरी लगे अच्छी लगे। बहुत शुक्रिया अजीब साहब। आप अपने काउंसलर जो आए हुए हैं लीड से ये कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। गवर्नर मास। थैंक यू। एक तो जी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया। अजीब साहब आप हम सब के लिए यहाँ माशाल्लाह रोल मॉडल हैं, और ऐसे रोल मॉडल हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाली जब तक तारीख लिखी जाएगी आपका नाम इंशाल्लाह सुनहरी रूप के साथ लिखा जाएगा। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे मेंटोर भी हैं और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि आपकी जो किताब ये छपी है उसमें मैंने आपके बारे में लिखा। आप मेरे बहुत करीबी दोस्त और साथ साथ मेरे अच्छे रहबर और मुझे सिखाने वाले भी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 1985 में जब आप लॉर्ड मेयर बने, उस वक्त आप प्रिंसेस डायना के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले या लिखे जाने वाले या सबसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता इंसान थे और फोटोग्राफ इंसान। मैं आपसे सिर्फ ये मेरा सवाल ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और पाकिस्तान में हम शायद ये जानते हो या ना जानते हो, कोई खातून है जिनका नाम है जन्नत मिर्जा। इतने रिस्पॉन्सिबल हैं अभी टिकटॉकर्स और जिनकी सोशल मीडिया आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा और आपके यूथ के लिए क्या मैसेज होगा कि आप किस तरीके से अपने पिछली आने वाले लोगों के लिए किस तरह से आप मुस्तकबिल रक्षा कर सकते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपनी तारीख को नहीं समझते हैं आप अपने फ्यूचर और अपने मुस्तकबिल के बारे में कतई न प्रेडिक्ट कर सकते हैं न प्रिपेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। Very brief. I think the history is one of the most important aspects of. जो हिस्ट्री है इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। हिस्ट्री actually is there from which we can learn many good lessons. ठीक है? Very briefly, as far as social media is concerned, I'm not an expert, but social, देखें, I'm always in favor of change. Change को आप तब्दीली को stop नहीं कर सकते, एक असूल है। लेकिन sometimes the change can be harmful. It depends on how to utilize the modern facilities, the modern inventions. ठीक है जी? ये आपकी जब कुछ बात आप करते हैं या मैं शोहरत के साथ जैसा आपने फरमाया उसके साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं और हकूक़ को जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं उसमें भी बैलेंस होना चाहिए। तो उससे ये है कि संभव ख़ासकर मैं खुद पाकिस्तानी कश्मीरी हूँ और पाकिस्तान से तो जैसा वैसा ताल्लुक़ है, हम में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है, जो आंसर है ना, वो बड़ा कमज़ोर है। हमें पर्सनल एग्रेंडिसमेंट जो है ना, वो आपने क्या कहते हैं उर्दू में, जो ज़ाती शोहरत की खातर हम हर बुरा अच्छा अमल करने को तैयार हैं। ठीक है? और जब तक हमने इस मुल्क के सियासी जो पैटर्न्स हैं, पॉलिटिकल पैटर्न्स को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ असूल है ना, हम अभी भी वो पुरानी के चक्कर में फंसे हैं। हम अभी भी वो रीडिंग जो पाकिस्तान में हो रही है वो कोशिश यहाँ भी करते हैं कि यहाँ पे भी किया जाए। जो मोटा बंदा 10 साल मरा हुआ है कि उसका नाम भी इलेक्टोरल रजिस्टर पर है, उसके रिश्तेदार को कहेंगे यार वोट दो, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वोट मिल जाएगा। नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये मामूली बातें आपको लगती हैं। जब वो प्रेस में आता है the whole community image is tarnished। ठीक है? एक अच्छी एग्जाम्पल आप जो कायम करें, हाँ वो टिकटॉक पे करते हैं या किसी और सोशल मीडिया में, और गाली गलौज के बजाय अच्छी बात या अच्छी वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं, तो दैट अफेक्ट्स द होल कम्युनिटी एंड इट्स इमेज एंड इट्स रेपुटेशन। हम इंडिविजुअली हमारी सोच है,
मेरे लिए क्या है। ये नहीं हम देखते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसमें बड़े लोग, उनके बड़े और मसाइल हैं, अंग्रेज के नज़दीक उनकी क्या है, वो एक परसेप्शन है क्या, एक इमेज क्या है। मिसाल के तौर पर 9/11 के बाद से लेकर आज मुसलमानों का जो एक इमेज था वो कितना डिस्टॉर्ट हुआ है। यही बात है ना। मुझे पता है कि मुझे आज से 15 साल पहले एक आया रिपोर्ट ऑफिसर लगा कि हाउ डू यू फील बीइंग ए मुस्लिम। तो मैंने कहा व्हेन आई केम टू दिस कंट्री आई वाज ब्लैक। ठीक है, मैंने कहा कि आफ्टर अबाउट 30 years आई बिकेम एन एशियन। एंड देन मैंने कहा कि इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी आई बिकेम मुस्लिम, एंड देन आफ्टर 9/11 आई बिकेम टेररिस्ट। तो ये हम लोगों को कलेक्टिवली ये सोचना है। जो देखिए ना, मैं तो Adiba, she told me, she told you all my age, I'm 85. So I am, no, what I'm saying is that I think the future lies with the coming young generation. I have always supported them, and they are now to help form the future of our community. ठीक है? And I think some of them are brilliant young people I meet. They're, full of enthusiasm, full of passion. They want to do something. They need encouragement. The living example is Sophia. Sophia at her very young age, her achievements are stupendous. Right? She's worked hard, I know that, day and night. But come on, I mean, there are so many young people now who are graduates in different subjects, this and that. Why they don't get involved in the issues concerned with their communities? Why do you run away? अंग्रेज से क्यों डरते हो? हमारे काउंसलर्स हैं या कुछ बैठे हैं, आई डोंट नो सम ऑफ देम, लेकिन मैं बात कर लूँ यार नहीं ये बात हम नहीं कर सकते। मैं कि क्यों? और यार थोड़ा यार को नाराज हो जाएंगे। मैं खान खसवल नहीं, अपनी प्रायोरिटी थोड़ी केड़ी है, अपनी कम्युनिटी। और आई कैन टेल यू दैट फाइनली the issue of racism and the issue of so-called minorities versus majority, it is not going to come. The discrimination and racism is not an issue which you perhaps assume and falsely believe that oh yes, there will be no racism in the next 10 years because Adiba is doing a good job, Mamita is doing a good job, and so on and so forth. No, it's going to be with you for a long time. What we need is perpetual struggle, no room for complacency. At the same time, I would say no room for despondency. I'm very optimistic. I have fought whole of my life for multiculturalism, which Goras rejected, and even this, even Blair, after Blair government, when the Tories came, they wrote it off from their agenda. But I always say, Britain has become irreversibly a multiracial, multi-faith society. There is no escape from him. And I think the white majority indigenous community has got to realize, acknowledge, and accept this irreversible reality and this now, irrevocable fact. Britain, हम नहीं वापस जाएंगे। हाँ, मैंने 1900 क्या कहते हैं या 72 में एक
छोटा सी रिसर्च की थी नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में, वो भी बहुत बड़ी होगी उसमें किताब। तो आई फाउंड उस वक्त मेरा कंक्लूजन ये था कि नो वन विल गो बैक परमानेंटली टू द कंट्री फ्रॉम विच दे कम। उसकी वजह थी मेरा लास्ट क्वेश्चन उस क्वेश्चन में ये था कि टेल मी, डू यू think that this society is better than the one you left behind? पढ़े लिखे लोग बोले जो कुछ उस वक्त के थे, 89% ने ये कहा था कि this society is better. उसकी वजह ये थी कि people, I mean, when you leave your country, it's the most difficult decision to leave your home country, your friends, your relatives, your surroundings, where you go. Why do you do that? Because your pushing factors are so strong. They push you. Poverty, deprivation, injustice. They say, go back, go somewhere else. And this has been happening from the time immemorial in history. जब आज पाकिस्तान में वो शहजाद बात करते हैं और ये पिछले 7-10 लाख लोग जो है पाकिस्तान से चले गए, they never say why. They are so bloody hypocrites. वो नहीं कहते इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ जॉब नहीं है, वो इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ गुर्बत है, वो इसलिए जा रहे हैं कि यूरोप और मुमालिक में उनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी. So we are part of British society now. This is our country. That's Please. मैं सिर्फ से आप बात करना चाहता हूँ कि जब से आप ब्रैडफोर्ड में आए हमने आपका साथ दिया है और एक पार्टी से आप कत्ल लग रहा है अभी तक एक पार्टी से हमारे जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं मेरे इनका बेटी आपकी आ रही है और छोटी एक क्या नाम था उनका नहीं रिजवाना से रवा दूसरी है इनका नाम पिछले दिन से सोफिया का नाम पढ़ रहा हूँ. इस तरह के बंदे हमारे आने चाहिए. आपके साथ तो अजीब साहब जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पहला इलेक्शन आप हार गए थे गांव में, उसका जितने भी हुए हम आप साथ रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे चौधरी हाट से बड़े बड़े अपने आप को फने खान समझते थे वो आपने हमेशा मुखालफत करते रहे. ये तो आप कहते हैं पाकिस्तान में होता है, यहाँ पर भी हुआ है आपके साथ और उसका आपने बिल्कुल तहम्मुल मिजाजी से काम किया है और इतनी लंबी अल्लाह ताला आपको उम्र दे, आगे भी तो सोचिए इस कौम के लिए क्योंकि हमारे नई जनरेशन में ऐसे बंदे भी निकलने चाहिए. वो अंग्रेजी में किसी ने ये कहा था इंग्लिश में, उसका तर्जुमा क्या है? उसने कहा था कि those who are trying to bring me down are already below me. मैंने कभी ये नहीं सोचा. Oh, thank you. I have a big person. Thank you. It's an honour being here today, Uncle. It's very nice to hear your story and how much you know people. But as a young person, I think what I want to say is you've done a lot. Our parents, our grandparents have been through a lot of sacrifice for us to have the life that we do now. But as young people, there's still so many doors that are closed for us and difficult to get through. So I think what I'm trying to ask is, what is your secret? What is it that we can learn from you to keep going, to keep pushing and fighting, so we can open these doors and build a better future for ourselves and our community? Don't give up what you want to do. As I said earlier, you need full commitment with all the honesty. Don't think that if I want to succeed, either I'll make a lot of money or I will have a lot of good job, publicity. No. Work for the cause you believe firmly. If you have an ideology to follow, study it, and once
you know in your own mind that I am moving on the right path. Never think about others who may say you're wrong and disagree with you. You do it what your heart dictates. Determination. Hard work. As far as the politics is concerned, I have always said if you're a person who are not brave enough, you're timid, don't go. There are so many hurdles, so many risks, so many things to hear which you may not like in your life. That is politics here or in somewhere else. But I have always believed that politics has its ethics too. Some people don't believe in ethics. They ruthlessly want to succeed. Asif Khan is going to be the last. One more, सर सबसे पहले तो अच्छा अनीस आपको ट्रिब्यूट कि माशाल्लाह आपने इतना कुछ अचीव किया है और हमारे लिए लर्न करने को बहुत कुछ है। मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आप मेरे ख्याल 1958 में आए थे, कौन सी ऐसी चीज़ है या ख्वाहिश है जो आपके दिल में रह गई कि अगर मैं वापस मुझे मौका मिले 1958 में तो आई वुड हैव डन इट डिफरेंट, या कौन सी ऐसी कोई चीज़ है जो आप समझते हैं कि आपने अचीव करना चाह रहे थे नहीं? आपके सवाल में आपकी सहाफत का बड़ा वो है रंग है। इस किस्म के सवाल साहब भी पूछते हैं, मुझसे इससे कबर से पूछा गया कई लोगों ने। मेरे ख्याल की मेरी जिंदगी में मुझे एक तो है कि आई हैव नो रिग्रेट्स। मेरा कंशियंस जो है वो बड़ा क्लियर है। मैं हमेशा अपने ज़मीन की आवाज़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है। बड़ी बड़ी रिश्ते, बड़े रोज सब कुछ पेश किए गए थे। मैं कर रहा हूँ हैप्पी। मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ताला मुझे एक और ज़िंदगी दे जो नामुमकिन है, लेकिन हाइपोथेटिकली एक मफरूज़े के तौर पर ये सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि इंसानी के लिए जो मेरे नज़दीक बहुत ही मोतबर जो पिछले हुए तबके, जो गुरबा, जो नाइंसाफियों के जुल्म से तंग आकर खुदकशियाँ करते हैं, उनकी जिंदगियों को शायद मैं और कोशिश करूँ थोड़ा सा आसान बना दूँ। मेरा छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन है जिंदगी में। आई डोंट क्लेम कि आई हैव डन दिस एंड दैट एंड ऑल दिस। ये तो पब्लिसिटी मेरा है, ये तो मैं मेरे ख्याल में तो नहीं है ना, बट आई एम नॉट मतलब के मेरी तस्वीरें हैं, सब कुछ है।